All right, so yesterday we discussed what is virtualization technology. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से यूज की जाती है, क्या उसका एडवांटेज है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन का क्या रोल है। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि the concept of virtualization came first and it is the building block of cloud computing. Actually virtualization के बाद में पहले दूसरे कॉन्सेप्ट्स आए, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जिनसे इवॉल्व हुई, लाइक ग्रिड कंप्यूटिंग and parallel computing, and then came our cloud computing. So the evolution of computing started with वर्चुअलाइजेशन एंड ओवर द ईयर्स वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चेंज आया है। जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन कल हमने देखे थे। होस्टेड एंड बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन होते हैं। तो इनिशियली टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन का ही ज़्यादा यूज होता था। नाउअडेज एनी hypervisor can be used as type 1 or type 2. So first, in simple words, what is virtualization? It is the process of running a virtual instance of a computer system in a layer abstracted from the actual hardware. Clear है? कोई भी virtual instance आप virtually एक गेस्ट मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं, that is abstracted from the actual hardware and it is isolated from the actual hardware and running independently. So virtualization refers to running multiple operating systems on a computer system simultaneously. This is true for your desktop computer also, partitioning जिसे हम बोलते हैं, and the vice versa is also true, which is used in enterprise level solutions, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी की, तो बहुत सारे फिजिकल मशीन को टाई अप करके और फिर उनसे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है. To the application running on top of the virtualized machine, it appears as if they are on their own dedicated machine, where the operating system libraries and other programs are unique to the guest virtualized system. So this is again true that each virtual machine acts independently as a separate machine. They have their own dedicated operating systems, libraries, and all the programs that are unique to that virtual machine. It does not have to do anything with the real physical machine or the host machine. Actually, this is a characteristic of a virtual machine. कि host machine में कुछ available नहीं है, but still they can use it in the guest machine. Host machine में चाहे आपके पास में वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो लाइब्रेरी नहीं है, you don't need that to be there in the host machine. You can simply just use in the virtual machine. So this is the concept of virtualization. Then we talked about type 1 and type 2 virtualization, जिसका कि कल मैंने आपको एक डिफरेंट डायग्राम से बताया था. तो दिस इज एक्चुअली द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन. इसके थ्रू बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं
Look at the bottom. First, we have the hardware layer at the bottom, which is our physical resources. On top of the hardware, when we directly have the virtual machine manager, VMM is the virtual machine manager, and it is also known as hypervisor. The common term is hypervisor. Hypervisor or virtual machine manager are the same thing. So in type 1 virtualization, which is also called as bare metal virtualization, our hypervisor runs directly on top of the hardware. There is no need of separate host operating system. This is the main difference. And on top of the hypervisor, virtual machines, different virtual machines are connected. तो ये हमारा हार्डवेयर फिजिकल रिसोर्स है, उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन लेयर है विच इज अ हाइपरवाइजर, एंड ऑल द वर्चुअल मशीन्स आर कनेक्टेड थ्रू द हाइपरवाइजर. The input output responses and requests are handled by VMM or hypervisor. तो यहाँ पे जो हमारा टाइप 2 virtualization type है, which is called as hosted virtualization. So as the name suggests, host operating system sits on top of the hardware layer, and then our hypervisor sits on top of the host operating system. This is the main difference. It is also dark here, that here we need only one single layer of hypervisor, and here there are two layers, host operating system and then hypervisor. Now, इसके ऊपर की प्रोसेस तो सेम है. फिर हाइपरवाइजर के टॉप पे आपकी वर्चुअल मशीन रहेगी, वर्चुअल मशीन के ऊपर आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा जो वर्चुअल मशीन यूज कर रही है, एंड देन आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी. सिमिलरली हियर all the virtual machines have their own guest operating system, and different applications are running on the different virtual machines. टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन में आपके पास ये एडवांटेज है कि आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली ऐप भी रन कर सकते हो. इन दैट केस यू कैन यूज दिस as a machine separately. If you don't need the hypervisor, you don't need any virtual machine, there is no requirement for now. You can simply use it as a physical machine by running your application on top of the host operating system. Simultaneously भी इसको यूज किया जा सकता है यूजिंग पार्टीशन. वर्चुअल मशीन्स भी रन कर रही हैं और होस्ट मशीन भी रन कर रही है. So these are the two types of virtualization techniques commonly used in all types of virtualizations happening everywhere in the world. Theoretically इसको देखें यदि तो bare metal virtualization में it runs guest virtual machine directly on a system's hardware, essentially behaving as an operating system. So your hypervisor is also behaving as the host operating system, and your hypervisor controls all the resources like memory, CPU, and input-output devices. Everything is controlled by hypervisor. All the communication between the hardware and your guest machine is controlled by hypervisor.
So this is more secure. A guest cannot directly talk to the host machine. Hypervisor always sits between them. So it controls the communication. Now in type 2 virtualization, physical resources are managed by the host operating system and virtualization is provided by hypervisor. So आपके जो physical resources, these are managed by your host operating system and hypervisor is simply providing the virtualization. So hypervisor is responsible for providing required virtual machines and running guest operating system. Hypervisor का यूज इसमें लिमिटेड हो जाता है. A guest can request for the required physical resources directly to host operating system. तो ये दो टाइप के वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये आपके फॉलोअप क्वेश्चन थे. आज मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ ये सब. तो वीकेंड इस सैटरडे इवनिंग तक आप उसका फर्स्ट असाइनमेंट रहेगा ये, तो उसको आप सबमिट कर देना. स्मॉल, आई थिंक आई विल जस्ट पोस्ट 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट. ज़्यादा लोड कभी भी नहीं देता मैं स्टूडेंट्स को. 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आज असाइनमेंट पोस्ट करूंगा और ये जो पीपीटीज हैं ये भी पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के ऊपर ही. तो सब कुछ देख के आप इसी में से कर सकते हैं. व्हाट इज अ हाइपरवाइजर? सभी को पता है ये. अब गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड हाइपरवाइजर. तो केवीएम, zen, Hyper-V, these three names you will always hear because these three are the most commonly used hypervisor. KVM, Zen and Hyper-V. What is bare metal hypervisor and hosted hypervisor? ये अभी डिस्कस किया हमने, सभी को क्लियर होगा. And what is the difference between type 1 and type 2? It is the same question. So anyone having any doubt until this topic? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है अभी. नेक्स्ट हमारा वर्चुअल सर. हाँ सर वर्चुअल बॉक्स और उसको भी हाइपरवाइजर बोल सकते हैं क्या? VMware को VMware वर्चुअल बॉक्स. हाँ, VMware इज अ हाइपरवाइजर ओनली. वो टेक्नोलॉजी, वो भी हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी ही है VMware. ठीक है सर. नेक्स्ट हमारे आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल. इसके पहले अब मैं आपके अटेंडेंस सर. हाँ बोलो, कौन क्या बोलो. ओके, अभी मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ. तो मैं अपने रोल नंबर वाइज नाम लूँगा. आप यदि प्रेजेंट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके और फिर एक्नॉलेज करना, या फिर हैंड रेज भी कर सकते हो इसमें. आस्था, अक्षय, प्रेजेंट सर. अतुल दुबे, भूपेंद्र,
Present, sir. Chandresh, Present, sir. Chetan, Present, sir. Devendra, Present, sir. Gaurav, Gaurav Sirsak, Harshita, Present, sir. Ishika, Present, sir. Jayant, Lakshmi, Lakshmi, Manas, Present, sir. Manav Pawar, Manvi Agrawal, Present, sir. Natraj, Pankaj, Present, sir. या पंकज आ गया। पार्थ, पार्थ कहाँ है प्रेसिडेंट? सर अभी वो बिजी है अभी प्रेसिडेंट। प्रदीप, प्रदीप मालाकर नहीं है। प्रिंस, नालायक थोड़ी है सर प्रदीप। प्रिंस, ऋषभ, प्रेजेंट सर। रिया, Present, sir. साक्षी, Present, sir. समृद्धि, Present, sir. संयम, शैलेंद्र, Present, sir. भानु, Present, sir. शिवानी, Present, sir. श्वेता, Present, sir. श्वेता है। तन्मय, तन्मय कोठारी और तन्मय दूसरा वाला अपना शर्मा। कोठारी और शर्मा जी दोनों में से कोई है? नहीं सर। तेजस, Present. वेदांत, वेदांत और देवेंद्र जामलिया, Present, sir. हर्षवर्धन। Present, sir. ओके, थैंक यू। दिस इज बेटर देन टेकिंग स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, नाम ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें मैं लाइवली देख सकता हूँ आप लोगों को। ओके, so next topic which we have is characteristics of virtualization. तो characteristics of virtualization में 4-5 चीजें importantly आती हैं। By seeing this diagram, first we will discuss and then we will see a little bit about theory. So first thing, when we hear the name virtualization, the first thing which comes into mind is partition. Virtualization is nothing but a partition. As simple as that. So एक फिजिकल मशीन है, वन सिंगल फिजिकल मशीन is divided into 3 separate virtual machine. This is partition, like you do in your laptop computer or home desktop computer. All these 3 different virtual machines may have different operating systems. There is no requirement to use the same operating system. So partitioning is the first use of virtualization. इसमें आप simultaneous resources को use कर सकते हो, अलग अलग applications run कर सकते हो। Next important characteristic of virtualization is isolated. All these 3 guest machines or virtual machines are
isolated from each other. They do not interfere with each other in any way. So if there is an attack on this machine and this virtual machine goes bad, there is a virus in this machine, it will not affect the other two machines. This is the main characteristic of virtualization, that these machines are isolated. So you don't need to worry about a single attack on a virtual machine. इसका काम करना बंद हो गया, ये अपना काम वैसे का वैसे कंटिन्यू रखेंगे. तो ये हमारा हो गया एग्जांपल आइसोलेशन का. एंड देन encapsulated. So a single physical machine is encapsulated into a folder. जैसा कि पहले डिस्कस किया था हमने, एक वर्चुअल मशीन में सारी इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन वन फोल्डर in which there is information about location and the physical resources used, and there is another folder which contains all the user data and all the application requirements of the end user. So this is nothing but a folder and encapsulation of a machine. You can move around this like a folder. So this is also possible कि एक फिजिकल मशीन यदि हमारी खराब हो जाती है फॉर एनी इशू लाइक एक्सटर्नल इश्यूज की, यदि कहीं पे पावर फेलियर हो गया है या कहीं पे बाढ़ आ गई है, so for some reason this is not working, then you can move this folder into another physical machine at a different location. They always have a backup in cloud service provider. They always have a backup to your virtual machine at a different location. So your data will never go waste. So encapsulation is the process of converting a physical machine into a file folder and file. Another characteristic of virtualization is independent. Independent means this is a little bit similar like isolated, but यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है इंडिपेंडेंट का, वो दो डिफरेंट फिजिकल मशीन्स का लिया हुआ है, जो वो हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगी, एंड दीज वर्चुअल मशीन्स कैन बी मूव्ड बिटवीन द टू मशीन. जरूरी नहीं है कि आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की तो आप उसको हमेशा एक फिजिकल मशीन के ऊपर ही यूज कर सकते हैं. यू कैन मूव अराउंड इट इफ द यूजर requires that he somehow in his first use he selected a different region for the activity, and now he wants to use it at a different region. So he can move his virtual machine between the two physical machines. This is also possible. So a virtual machine is independent of a physical machine or location. तो बाय दैट डायग्राम आपको कुछ चीजें समझ में आई कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं.
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्चुअलाइजेशन की। अब वही एडवांटेजेस यदि हम लिखना चाहें तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको एक हाइपरवाइजर यूज करने का क्या है, इंक्रीज सिक्योरिटी। Hypervisor can control and filter the activity of the guest program, thus preventing some harmful operations from being performed. एक जो हाइपरवाइजर की लेयर हमने ऐड की है गेस्ट मशीन और होस्ट मशीन के बीच में, तो all the communications are controlled by that hypervisor. So if someone using a virtual machine try to interfere with the host machine, right? किसी ने एक वर्चुअल मशीन बना के उसको न्यूसेंस के लिए या कोई गलत एक्टिविटीज के लिए यूज करना चाहा, तो ही कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द होस्ट मशीन। हाइपरवाइजर किसी भी तरह का यदि फॉल्स अलार्म उसको आएगा एक्टिविटी में, तो ही हाइपरवाइजर विल डिस्कार्ड दैट एक्टिविटी। So it also acts as a security layer. वो फिल्टर कर सकता है कि this looks suspicious and this looks harmful, so वो उसका रिक्वेस्ट कैंसिल कर देगा। So resources exposed by the host can be hidden or simply protected from the guest by using virtualization. Now sharing and aggregation. Sharing and aggregation is already discussed many times. Like sharing is in which many virtual machines are created on a single physical machine. So that is called sharing the resources. And aggregation is also possible, like many physical machines are tied together and it will create a single virtual machine to be used for any organization. So this process of aggregation is also called as clustering, clustering the physical resources. Portability. Portability क्या हो गया? In the case of hardware virtualization, the guest is packaged into a virtual folder that in most cases can be safely moved and executed on top of different virtual. तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, it is just like a folder which can be moved around. तो पोर्टेबल है वो, उसको डिफरेंट वर्चुअल मशीन के बीच में मूव कर सकते हैं। These are some advantages of virtualization. Now the last topic for today is input-output virtualization types. So virtualization can also be divided in as two, full virtualization and para-virtualization. पहले हमने जो दो टाइप वर्चुअलाइजेशन के देखे, those were bare metal virtualization and hosted virtualization. जब इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्चुअलाइजेशन हम करते हैं, तो we can divide that into two parts as full virtualization and para virtualization. Most commonly we use para virtualization in all the activities. So full virtualization is allowing multiple guest operating system to execute on a host operating system independently. So this is more like a
bare metal virtualization, in which guest operating system issues hardware calls to access hardware. Right? So this is more like a bare metal virtualization, and it is called as full virtualization, जहाँ पे कि हमारा जो guest operating system है, it can issue hardware calls to access hardware. This is cost effective, right? Because you don't need that much uh, hypervisor technology in between. You will still need hypervisor to manage the guest operating system, but not all the communication. So this is a cost-effective method used by small organizations in which they don't have to worry about more security threats, and they want to just use a cheaper technology. But in para-virtualization, it allows multiple guest operating systems to run on host operating system while communicating with hypervisor to improve the performance. Para-virtualization में सारे communication goes through the hypervisor. This helps in improving the performance, and also it is more secure than the full virtualization technique. Guest operating system communicate with hypervisor, which allocates hardware resource. ठीक है, तो फुल वर्चुअलाइजेशन और पैरा वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे आज का लेक्चर, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. यू हैव अ गुड डे. थैंक यू. Thank you.